Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome to Testbook Regulatory Bodies. In this particular session, basically, we are going to talk about a report. So, today's session is generally based on World Bank Group report, and the report is very important one that is called World Economic Prospects Report. Okay, so I hope you guys heard about this particular report so many times. So, this report was got introduced or launched for 24-25 in the month of June, July 2024 itself. Okay, so today we will make an analysis of this particular report and we will understand the key areas of this particular report, right? So everyone, those who are watching live, please quickly join in and do mention into comment section if I'm clearly audible and visible, so we can start our today's discussion, right? So every day Monday to Saturday we generally conduct these particular at 6 p.m. we conduct session based on these topic. So today like this session is generally based on important report in indices. Okay, so as I told you, so today's topic is global economic prospects report. Okay, so this report again very important one. Okay. So the report is generally published by World Bank Group and it is all about the how world economies are doing and what are the key challenges and even like kind of a futuristic approach also. ठीक है, तो आने वाले समय में क्या क्या एरियाज आपके हैं, ठीक है, जो इम्पैक्ट मेकिंग आपका हो सकते हैं पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट एरियाज कि कौन कौन से आपके जो एरियाज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स and they generally help you out in all the regulatory bodies examination. Okay, so every year around June and July they generally publish this particular report and data is like year on year basis data. ठीक है, तो start करते हैं आपका with the facts and figure which are generally part of this one. ठीक है, so global growth is projected to held steady at 2.6% in 24-25. So for the current financial year, the world economy is expected on an average growth rate is how much? 2.6%. And in 2025-26, it is little bit up, that is 2.7%. ठीक है, तो करंट जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो बाय 2.6% एंड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 the expected growth rate by this World Bank Group report is 2.6%. ठीक है, so like that is kind of a constant measure, or like we can say there will be a little bit improvement in overall consumption in the world economies, especially from emerging and developing economies, right? So they are the major pillar behind this particular growth things. Okay? So if you talk about some top-notch economies like US economy, okay, has continued to grow despite the most aggressive monetary policy tightened in 40 years. Okay? So since like just after this COVID-19, the monetary policy or the Federal Reserve Bank of the country US, okay, so they generally have tightened the overall norms than others. So despite this they are achieving the fine growth rate. And if you talk about the India, so in case of emerging and developing countries category, so India is one of the leading countries, so जहाँ पे सबसे ज़्यादा growth rate आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, so India's economy has been by strong domestic demands with surge in investment in reverse service activities. Okay, so मतलब आपका डेवलप कंट्रीज से आपका यूएस एंड डेवलपिंग और emerging एंड डेवलपिंग कंट्रीज से आपका इंडिया. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स, अगर हम अदर कंट्रीज की आप यहाँ पे बात करते हैं. ठीक है, सो रियल जीडीपी आपका अगर हम देखते हैं जैसे यूएस, यूरो एरिया एंड जापान. ठीक है, सो यूएस इट इज लाइक आपका अगर हम लोग 24-25 की बात करते हैं, ठीक है, सो इट इज वर्ल्ड इकोनॉमी 2.6, 2.6, 2.7, 2.7. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट हाफ आपका 2.6 एंड सेकंड हाफ इवन इट इज 2.7, 2.6 एंड 27 आपका तो एस्टिमेटेड है फोरकास्ट आपका. ठीक है, द फोरकास्ट एफ मींस फोरकास्ट. ठीक है, फोरकास्ट फॉर 25-26 इज
2.7, ठीक है। अगर हम यूएस की बात करते हैं, सो यूएस आपका यूएस एंड यूरो एरिया, तो यूएस 1.5 टू 1.7, ठीक है। एंड आपका फॉर 25-26 इट इज 1.8, ठीक है। Again, Euro area, very important area for the world economies team. So 2.5 and 1.8, 1.8. So there is a slight decline in this particular one team. Japan आपका 0.7, 1.4, 1.3. Again, there is a recovery in the overall production things and all. ठीक है। चाइना वन, अगर emerging market and developing countries की हम बात करते हैं in this particular category, so चाइना आपका, so that is if you talk about the China, 4.8, 4.1, 4%, ठीक है। And India, we already talk about India, ठीक है। So India, it is about 7 point something, ठीक है। That data is missing from this list. हाँ, India is here, ठीक है। So India अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपका, so it is 6.8 आपका, 6.7, 6.8, 6.6, 6.7, 6.8 आपका, ठीक है। So there is a continuous growth in overall numbers, ठीक है। So I'll share this particular PDF for your reference purposes. You can also have, you can go through this particular one and कि ओवरऑल आउटकम कैसा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमीज के संबंध में by this particular report. So you can go through this one, ठीक है। So United State आपका, if you talk about the United State, ठीक है। So United State and आपका emerging and developing economies and all, जिनका एक references आपका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या even we just gone through that exact numbers also, ठीक है। So now what are the reason for this kind of stagnation in world economy, ठीक है। So यहाँ पे, or even there are some economies, country like China, they have a slight decline in coming years. Even in Euro area, there is a slight decline. So, and there are some areas like country like Japan or country like US and country like India, they are having a kind of continuous growth over next 2-3 years. तो यहाँ पे आपका जैसे if you talk about the global trade, it becomes stuck after this COVID-19, and even like countries, they have their policies regarding the internal procurements and others. तो वो सारी चीजें जो यहाँ पे रही हैं। So the value of global service trade grow by 9% in 2023, driven primarily by recovery in tourism flow, ठीक है। So this is the major area, ठीक है। पर्यटन ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इसको। Global trade in goods and services was nearly flat in 2023. Weakest performance outside of global recession in the past 50 years, ठीक है। This is very concerning, ठीक है। So like अगर हम लोग ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, so this is the worst performance in last 50 years by the world economies. The volume of goods traded contracted by most of 2023 and fell 1.9% for the year as a whole, ठीक है। So there is a major decline in this particular part, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ओवरऑल डिक्लाइन के लिए आपका, जैसे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। So the figure are generally coming down in negative side आपका, ठीक है। So this is the one, ठीक है। Next one, in 2024, aggregate commodity prices have been generally rising against a backdrop of a tight supply condition and sign of firmer industrial activities, ठीक है। So oil prices have been fluctuated this year, trending substantially higher in April 24, in the context of escalating tensions in Middle East, ठीक है। ये जो आपका यूरोप, सॉरी आपका रशिया, यूक्रेन, या फिर आपका जो मेजर अभी मिडिल ईस्ट वाला अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो अरब, सऊदी अरब एंड आपका ईरान, इराक, ये जो क्लासेस हैं, दे हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वन, और इनका आउटकम आने वाले समय में और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपका इस पर डालने वाला है, बिकॉज जब ये रिपोर्ट तैयार हुई थी तब और आपके कंडीशन में दैट कंडीशन बिकम वर्सन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब हुआ है। नेचुरल गैस प्राइसेस फेल नियरली 28% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24, aimed robust production, mild winter weathers and evaluated inventories also, ठीक है। तो इनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, देयर प्राइसेस गॉट डाउन, ठीक है। तो उनके ऊपर डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आपका देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड प्राइसेस रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई, fueled by geographical concern and central bank purchases, ठीक है। So geographical concern is about that war and others, and central bank purchases basically to protect their currencies or to provide the strength their currencies. Usually central bank they purchase gold
सो जिससे वो अपनी करेंसी को आपका बैलेंस आउट कर सके, ठीक है। Food prices are forecast to dip by 6% in 24 and 4% in 25, mainly reflecting ample supply for grains and as well as oil and meals also, ठीक है। So जो overall आपका जो food inflation है that will be decline as per this particular one, ठीक है। Global inflation, if you talk about the global inflation, okay, so global inflation has continued to decline, yet it remain above target in most of advanced economies, and about one fourth of inflation targeting emerging market and developing economies, ठीक है। So सबसे ज्यादा जो impact रहता है most of the time that is the one, because these are the economies, they have to maintain a certain level of inflation, like country like India. So we generally take a target of we generally took a target of 4% plus to minus 2. तो वैसे ही हर एक इकोनॉमीज के अंदर आपका तो यहाँ पे भी जो इम्पैक्ट रहेगा अक्रॉस द emerging market and developing economies in East Asia and Pacific. Headline inflation broadly continue to trend near or below प्री पैंडेमिक एवरेजेस आपका, ठीक है। तो जो पैंडेमिक से पहले वाली सिचुएशन थी अगेन ये आपका इन्फ्लेशन प्राइसेस में वहीं जा चुका है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक अक्रॉस मेजर एडवांस इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली लोअर पॉलिसी रेट इन 24। तो अगर ये अपने पॉलिसी रेट को लोअर करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनका इम्पैक्ट आपका पड़ेगा किसके ऊपर, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर, जहां पे मोस्टली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। पॉलिसी रेट प्रोजेक्शन derived from financial market have been volatile since US policy tightening start in 2022 itself, with expectations repeatedly revised higher over time। जैसे अभी पिछले कुछ समय से हो रहा है, यूएस फेड के द्वारा आपके जो रेट्स कट किए जा रहे हैं, तो उसका वो भी आगे भी अगर ऐसा ही करता रहा, सो दैट विल मेक मोर इम्पैक्ट ऑन अगेन ऑन emerging market and developing economies. Then we have elevated debt. So many emerging market and developing economies are contending with high debt in an environment of weak growth, steep borrowings cost, and a multitude of downside risk as well. So these challenges are particularly acute for poorest countries where many sources of financing are drying up or have become cost prohibitive, ठीक है। सो अगेन आपका अगर हम लोग बात करें डेट का, ठीक है, सो लाइक अगर आप लाइक इफ यू स्टडी कंट्रीज लाइक this, ठीक है, emerging market and developing economy, so they come up with the deficit financing, ठीक है। So deficit financing is the major source for them for the capital financing and all, capital budgeting and all, right। तो वो क्या करता है, आपका डेट लेते देन इन्वेस्ट इन द कंट्री। तो यहाँ पे आपका जैसे ये जो डेट का वर्जन है, लाइक इवन इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया इटसेल्फ, तो हमारे ऊपर भी इतना ज्यादा डेट है, ठीक है। तो आपका जैसे फिस्कल डेफिसिट आपका जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी इन इकोनॉमीज के अंदर आपका आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज आपका रीचिंग नेट जीरो कार्बन बाय 2025 जो हमारा टारगेट लिया गया है, will acquire cutting green house gases emission by between 1/4 and 1/2 by 2030 relative to 2019. However, current global commitment are estimated to reduce emission by 10% by the end of the decade, ठीक है। तो हमने टारगेट तो लिया था कितने का, नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लिया गया था आपका कितना, 100% बाय 2050। बाय 2030 आपका हम लोग 1/4 एंड 1/3 तक जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वी रीच ओनली 10% एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो दैट इज वन अनदर एरिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या डिजिटल ट्रांजेक्शंस अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सो डिजिटल डिवाइड कंटिन्यू टू वाइडन। About 1/3 of the global population, 2.6 billion people, remain offline in 2023. About 18% of population in emerging market and developing economies lacked electricity, while only about 63% had access to the internet, compared with over 90% in advanced economies, ठीक है। So advanced economies we have this rate, and in global economies the rate is very less, ठीक है। तो ये आपका जो एरियाज है, ठीक है, अगेन दिस इज लाइक इन दिस पर्टिकुलर एरिया अगर आप
कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी का विद रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, सो इंडियाज परफॉर्मेंस इज लाइक वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। अगर हम लोग खासकर आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वाले फॉर्म के अंदर है, तो ये काफी बड़ा ऐसे इंडियन इकोनॉमी के लिए जहां पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिला, ठीक है। लिफ्टिंग ह्यूमन कैपिटल, द पैंडेमिक अब्रॉड अबाउट a considerable disruption to schooling and learning, and is likely to have lasting and unequal impact on learning levels also. Since 19, the learning poverty rate is estimated to have risen by uh, estimated by 13% points to 70% on average in low and middle income countries आपका। तो education के ऊपर आपका that we got a major impact also through this pandemic, and that is continued आपका। Food security, major drivers for food security and malnutritions are conflict, extreme weather patterns, economic downturn, and inequality, which have intensified in recent years, often occurring in combination also. The rise of trade restrictions measure has further accumulated food intensity exposures people to fluctuations in international food prices also, ठीक है। तो लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ओवरऑल अगर आप इस रिपोर्ट को समराइज करते हैं, ठीक है, सो द रिपोर्ट वाज अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट विच इज बेसिकली रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। सो जहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं आपका वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल पे, जैसे हमने फूड से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड या अदर्स, those challenges got highlighted in this particular report. Apart from that, we have key which economies are doing good, which economies are doing bad, ठीक है। So basically, like if you talk about the developed economies, US is doing good, which is a good thing for the world economy, ठीक है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ डेवलपिंग मार्केट एंड emerging economies and developing economies, India again doing really good, but the concerning part is China and Euro area, तो जहां से आपका कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस आपका देखने के लिए मिले, एंड मे बी इन कमिंग ईयर्स आपका 24-25 के अंदर जहां पे उनके ग्रोथ के ऊपर आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, एज वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑल्सो, ठीक है। सो हर एक इकोनॉमी की जो डिटेल आपका जो आउटकम्स है, दे आर गिवन इन दिस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, what are the major challenges we are facing at world level apart from these war crisis and the impact of war crisis on these particular things, वो आपका ग्लोबल ट्रेड हो या फिर आपका अगर हम लोग बात करें कॉमोडिटीज प्राइसेस के ऊपर आपका, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पेशली इन emerging economies and developing economies, ठीक है। इसके अलावा फिनेंशियल के अंदर आपका दैट कंसर्न फ्रॉम दी डेवलप कंट्रीज, अगर वो अपने रेट डाउन करते हैं लाइक यूएस इज डूइंग फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, तो उससे कहीं ना कहीं दे अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो जो इमर्जिंग मार्केट है उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डेट इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस इमर्जिंग मार्केट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इन लोगों के लिए रहता है, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज इज ऑलवेज अ कंसर्न, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इट इज like it is fabulous, it's very good numbers, but if you compare with the other things in other areas, so this is very worst, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लर्निंग्स आल्सो गॉट डिस्टर्ब एंड फूड सिक्योरिटी इज आल्सो कंसर्न इन मेजर एरियाज, ठीक है। तो ये आपका रिपोर्ट विच इज नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, every year it is released by World Bank Group in the month of June and July, ठीक है। And very important report for all the regulatory bodies examination. So I'll share this particular PDF in our Telegram group, ठीक है। So आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, and if you have some queries and all, so please do share those particular queries also. Now I'll see you just after half an hour at 7 p.m. So where we will talk about the management functions, ठीक है। So today's like 7 p.m. basically we will discuss management function in detail, ठीक है? So what are the functions of management, which is also known as management process, आपका planning, organizing, staffing, directing, controlling, ठीक है। And
फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चन. सो उससे हम लोग वहाँ पर आपका वो प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा. एंड दीज 7-6 PM सेशन ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, तो हर दिन हम लोग एक रिपोर्ट आपका डिस्कस करते हैं या अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं. सो इफ यू इवन वॉचिंग इन रिकॉर्डेड वन ऑल्सो, इफ यू हैव सम क्वेरीज, प्लीज डू शेयर दोज पर्टिकुलर क्वेरीज विद अस. ठीक है, तो आप अपनी क्वेरीज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड इफ यू आर फाइंडिंग सम चैलेंजेस इन सम एरियाज, आपका जैसे कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट है इन अदर्स, यू कैन लिस्ट डाउन दैट रिपोर्ट इन इंडेक्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद दैट रिपोर्ट ओनली, राइट. एंड इसके अलावा इफ यू हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, so there is a form given in description box, so do fill that particular form. So we will connect with you and we will solve out your problems. ठीक है, इसके अलावा बिलीव गाइस कि 25 इज द ईयर जहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी इन रेगुलेटरी बॉडीज. इट्स द बेस्ट टाइम टू एंटर इन दिस different regulatory bodies. That is a dream job for most of you. ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन इन ऑल. ठीक है, तो वो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे नहीं हो पाएगा. ठीक है, बिकॉज these examination need certain like preparation. You have to have prepare your fundamentals and all. ठीक है, तो बहुत सारी मास्टर क्लासेस होती हैं अदर एरियाज, तो वहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. जो हेल्प चाहिए वो आप मांगे, बट आपको इवेंचुअली यू हैव टू एग्जीक्यूट दोज पर्टिकुलर थिंग्स. We can just guide you in some areas. The 95% selection is in your hand, right? तो वो चीज आपका जिसके ऊपर आपको काम करना होगा. ठीक है, तो दोस्तों आई सी यू जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर इन आवर टॉपिक ओरिएंटेड सेशन, तो जहाँ पे आज हम लोग मैनेजमेंट फंक्शंस को स्टडी करेंगे. So I'll see you there. Please do join that particular one. Okay. So this is it from my side. Now I'll see you next week for the report things. And I'll come up with one another report or indices, and we will explore that particular one also. Right. So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day.